Do you know, in the 10th century, the world recognized a man as the second teacher. If Aristotle was the first, then Al-Farabi was the second. He did not see Islam and logic as separate rivals, but he see Islam and Mantiq as a two sides of the coin. Most people think faith is only about the दिल का साफ होना, but the Quran rapidly addresses ulul albab, यानी कि वो लोग जो कोर इंटेलिजेंस रखते हैं। कुरान सिर्फ मनाने को नहीं कहता बल्कि एनालाइज करके चैलेंज देता है। इमाम अल गजाली, द जेड ऑफ आवर ट्रेडिशन, once hit a wall of total skepticism. He did not ignore it, he embraced it and said, doubt is the first stage of certainty. उन्होंने सिखाया बिना इन्वेस्टिगेशन के जो ईमान है वो सिर्फ अंधी बदली या इनहेरिटेंस है, ना कि कन्विक्शन। Unless you test your faith, you do not own it. We come from a tradition of polymath scholars who were hafiz of the Quran and masters of algebra. क्योंकि उनके लिए laws of nature को समझना actually creator को समझना था। अकल, intellect and वही revolution are not enemies. ये एक ही परिंदे के दो पर है, इनके बगैर परवाज मुमकिन नहीं। Islam does not want you to be a blind follower. Islam wants you to be an intellectually architect. सिर्फ किताबें मत पढ़े, कायनात को डिकोड करे, थिंक, एनालाइज एंड इवॉल्व, क्योंकि सोचना भी इबादत।